Okay. Hi everyone. How are you all doing? Yes, let's wait for one more minute before we can start. Keep joining. All right. Perfect. So yes, today's topic we are going to take, because I had got a lot of questions where everybody was asking, ma'am, is there any way that we can, remove the third party? So what do we mean by third party? When person A is in relationship with person B, and person B gets involved with person C. So that person C is known as third party. Yes, correct? Yeah, so I was getting a lot of questions, ma'am. Is there any way that we can remove third party with hooponopono? उसको remove करने के लिए hooponopono कैसे करेंगे? In today's video, I will not share a technique, but rather a perspective where I want you to make a decision whether which route you want to take. Whether you want to go with perspective A or perspective B, I'll leave it up to you. In today's video, whosoever watches will have completely difference of opinion what I'm saying. I give you all the liberty. Of course, whatever I'm sharing from whatever I have learned that is coming from my conditioning, my belief. If it resonates with you, stick to it. If it doesn't, make your own choice. I completely respect that. That's absolutely up to you. Yeah. But I do want you to give a very, very detailed and a deep thought on what is that you want to choose out of these two routes. Yeah. This session is going to be in English and slightly in Hindi. तो मैं आज आपको कोई तकनीक नहीं बताऊंगी, मैं आज आपको एक पर्सपेक्टिव दूंगी जिसमें आप फिर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको रूट ए जाना है, रूट बी जाना है। ठीक है। और बहुत लोग ऐसे होंगे जो आज का वीडियो देखेंगे जो कंप्लीटली मुझसे डिसएग्री करेंगे। बिल्कुल, आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ अपने पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ। आपकी चॉइस है कि आप जो मैं बोल रही हूँ उससे आप रेजोनेट कर पा रहे तो बिल्कुल फॉलो करिए, नहीं रेजोनेट कर पा रहे वो आपकी चॉइस है। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, people who are watching this video for the first time, my name is Divyadeep Kaur. I'm a healer, life coach, and a graphologist. And throughout, I think it's been 4 or 5 years, we have constantly worked on this beautiful Hawaiian technique called hooponopono. I have personally practiced it for multiple reasons, like the reasons you cannot even imagine. And it has given me results. From when my phone was not working, from my laptop crash, to catching a flight, to whatnot, to getting a refund from a flight, or doing it for relationship, doing it for money, for so many reasons. And because I have personally tried, learned about this technique in detail, I think whatever I'm going to share with you will actually blow up your mind or open up your mind. Yes, so stay with me till the end of the video where I can share whatever I have learned. Now, we've already spoken about what a third party is in a relationship. Now, before I get into that, of course, people who will be in relationship will only resonate with me, because this is a problem which will be faced by only a person who is already in relationship. Yeah. I want you to dwell deeper today. It is going to be an intense video. What made you, what is the thought when you get, what is the feeling that you experience when you think of that third party in the relationship, or when you think about your relationship with that person? What are your feelings? What are your thoughts? How do you feel about it? Yeah. See, generally when we always talk about third party, जब भी हम बात करेंगे कि यार उस रिश्ते में ना एक तीसरा व्यक्ति है, तो जो भी व्यक्ति उसका जो अनुभव होगा, जो फीलिंग्स होंगी, जो बिलीव्स होगा, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होगा. ऑफ कोर्स यू विल नॉट फील राइट अबाउट दैट पर्सन. ऑफ कोर्स यू विल नॉट हैव अ वेरी वेरी positive frequency towards that person, isn't it? You will feel like, why that person spoiled my beautiful relationship, why that person doesn't understand that she's spoiling or he's spoiling these two people's life, or all these questions. Firstly, I want you to identify and acknowledge what are the questions, what are the thoughts you get when you think of this person. Yeah. If it is negative thoughts, write it down. If it is not so positive thoughts, write it down. If it is positive thoughts, which I'm sure will be in very, very rare case, do write it down. And most of the times, the common thought that most of you will experience will be thought of blame
or a feeling of blame that it is because of this third person my relationship has completely changed, or my relationship dynamics changed. Now I cannot have my partner. Now I cannot have this person in my life. Now I feel the lack in this relationship, right? So this is one thing you need to write it down. Now when we talk about Ho'oponopono technique, you need to understand the entire concept of Ho'oponopono is only to neutralize your energy. या न्यूट्रलाइज योर एनर्जी. जो ये पूरी होपोनोपोनो की तकनीक है वो एक ही चीज पे बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है. वो किस चीज पे? कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपकी जो ऊर्जा है, उसको न्यूट्रलाइज करती है. यानी कि कभी आपको नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, तो उसको वो न्यूट्रलिटी पे लेकर आती है. अब जब आप, ठीक है काश जी मैं हिंदी में बोलती हूँ, जब आप उस तीसरे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो आपके अंदर क्या थॉट्स आती हैं या क्या भावनाएं आती हैं? मैं बहुत इस चीज के लिए आई एम श्योर कि आपको ये भावनाएं तो नहीं आती होंगी, यार उसकी वजह से मेरा रिलेशनशिप बन गया. आपको गुस्सा आता होगा, आपको ब्लेम आता होगा, यार या आपको नेगेटिव थॉट्स आते होंगे. ये सारे थॉट्स आते हैं, इजंट इट? कि वो ज्यादा, या कंपैरिजन आता होगा, या जेलेसी होती होगी, इजंट इट? आपको लिखना है कि वो कौन कौन सी फीलिंग्स है, कौन कौन से थॉट्स है जो आपको आते हैं. ठीक है, जब आपने वो लिख लिए हैं तो आपका जो प्रयास होता है, मैंने बहुत सारे YouTube वीडियोस देखे जब मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पे बनाऊंगी, और बहुत सारे लोग मुझसे डिफर करेंगे कि नहीं, कोई ऐसी टेक्निक हो जिससे वो थर्ड पार्टी को रिमूव करा रख सकते हैं, उसमें और ज्यादा प्यार, पहले जैसा हार्मनी, पहले जैसा प्यार वापस लेकर आ सके. लेकिन जो मैं आज आपको बताऊंगी, होपोनोपोनो बात करता है कि सबसे पहले ये जो आपके इमोशंस हैं, जो भी अपने रिलेशनशिप की तरफ या आपके जो इमोशंस है उस थर्ड पार्टी की तरफ, उसको पहले न्यूट्रलाइज करते हैं, स्टार्टिंग विथ योर ओन सेल्फ. सबसे पहले आप आंख बंद करके होपोनोपोनो करेंगे कि आप क्या एक्सपीरियंस करें. क्या आपको गुस्सा आ रहा है? क्या आपको जेलसी हो रही है? क्या आप दूसरे सामने वाले को ब्लेम कर रहे हो? क्या आप हर्ट हो रहे हैं? या क्या आप एनवी हो रहे हैं? क्या सारी फीलिंग्स आपको आ रही है? तो अपने आप के साथ बैठिए. बिफोर यू कैन रीच आउट टू देम, यू हैव टू न्यूट्रलाइज योर एनर्जी. आपको जो ये अपनी ऊर्जा है, जो ये अपने इमोशंस है ना, उसको पहले न्यूट्रलिटी पे लेकर आना है. जो भी आपको इमोशंस फील हो रहे हैं, थोड़े बहुत भी नेगेटिव इमोशंस फील हो रहे हैं कि काश वो मेरे साथ होता या काश वो मेरे साथ होती, उसको लेकर हम पहले अपने इमोशंस को न्यूट्रलाइज करेंगे. विल ब्रिंग आवर इमोशंस इनटू न्यूट्रलिटी. अब ये न्यूट्रलिटी में आने के लिए आपको 1 हफ्ता भी लग सकता है, 4 दिन भी लग सकता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ योर इमोशन. आपकी जितनी भी इमोशंस है उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि आप 1 हफ्ते में वो क्लेंजिंग कर रहे हो, आपको 2 दिन में वो क्लेंजिंग हो रही है, 10 दिन में. तो लेकिन सबसे पहले शुरुआत खुद से ही करनी है, क्योंकि होपोनोपोनो एक बहुत ही अच्छी चीज बोलता है, जो तकनीक में हमने सीखा है कि whatever you are attracting in your life, जो भी आपकी लाइफ में परिस्थिति आ रही है, जो भी सिचुएशंस आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, इट इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ योर एनर्जी. वो आप ही के अंदर की कोई एनर्जी है जिसका रिफ्लेक्शन आपको बाहरी दुनिया में दिखता है, थ्रू सिचुएशंस, थ्रू पीपल. तो अगर ये जो भी हो रहा है आपके जीवन में, कहीं ना कहीं इसके कारण आप ही हो, क्योंकि आपके अंदर वो फियर होंगे, क्योंकि आपके अंदर वो सारी ऊर्जाएं होंगी जिसकी वजह से वो सिचुएशन अट्रैक्ट आपने की है. अब बहुत लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे कि मैम मैं क्यों अट्रैक्ट करूंगी, मैं क्यों अट्रैक्ट करूंगा ऐसी सिचुएशन, मेरा इतना अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, मैं तो चाहती थी, मैं तो उसको वापस लाना चाहता था अपने जीवन में, वापस लाना चाहती थी, अब वो किसी और के पास चली गई है या किसी और के पास चले गया, तो ये तो मैंने तो क्रिएट नहीं किया है. कई बार क्या होता है, sometimes we are aware of our energies, sometimes we are not aware of our energies. कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है हमारे अंदर के डर क्या है, हमारी अंदर की इनसिक्योरिटीज क्या है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सबकॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हमें पता ही नहीं होता हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट क्या कर रहे हैं. और दिस इज वेरी ट्रू कि हम
हमें लगता है कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, बट अब आप जब डीप डाउन, जब आप उस गहराई में उतरेंगे तो आप समझेंगे कि कहीं ना कहीं वो जो भी परिस्थिति आई है ना, उसको लाने का जो मेन अट्रैक्शन था ना, वो आप ही थे। वो कहीं ना कहीं आप ही की एनर्जी थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जो भी पीपल वाइब्रेट एट दैट फ्रीक्वेंसी, दे अट्रैक्ट दैट सिचुएशन एंड देन दे ब्लेम, अरे वो तो सामने वाला रिलेशनशिप के लायक ही नहीं था, वो क्यों दूसरे के, वो तो पहले ही लॉयल नहीं था, एंड ऑल द ब्लेम गेम वी प्ले, isn't it? So firstly you need to acknowledge what are your emotions. तो आपके जो इमोशंस अभी आप फील कर रहे हैं, मुझे पता है कई बार रोना भी आएगा जब आप होपोनोपोनो करेंगे। होपोनोपोनो कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू चैंट आई एम सॉरी टू माई सेल्फ, please forgive me, thank you, I love you. You have to continuously say I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. आप इसको कंटिन्यूसली बोलेंगे, जितनी देर तक आपका मन करता है तब तक बोलिए। वैसे आप 5 से 10 मिनट भी बोले या 108 बार बोले तो इट इज मोर देन सफिशिएंट, लेकिन ये एक बार करने से नहीं होगा, क्योंकि जो जितनी भी एनर्जीज आपने अक्यूमुलेट की है ना, वो एक बार में सारी क्लियर नहीं होगी। इट विल नॉट बी क्लियर एट वन गो, यू विल हैव टू डू इट रिपीटेडली टिल द टाइम यू एक्सपीरियंस द डिफरेंस। जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होता तब तक आप उसको बोलते नहीं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, लव यू, हर रोज बोलना है। तो पहले तो अपनी एनर्जी को न्यूट्रलिटी में लाते हैं। कभी भी याद रखना कि जब आप किसी को हील करना चाह रहे हैं या सामने वाले को ब्लेसिंग्स देना चाह रहे हैं, वो तभी हो सकता है जब आपकी एनर्जी सॉर्टेड है। When your energy is sorted, then only the reflection will be seen in the other person. And believe me, when you will be doing this, I have personally done this on the person or that, I didn't share or I did share a very good relationship, and then there was a time I didn't share a very good relationship, and I've personally done Ho'oponopono and I've experienced changes, and I've constantly done Ho'oponopono. Yes. Now when you do that, जब आपने अपनी सारी जो एनर्जी न्यूट्रलिटी पे लिया है, अब आप करेंगे अपने पार्टनर के ऊपर या अपने एक्स पार्टनर के ऊपर, हु इज योर पार्टनर। अगर पार्टनर है भी तो शायद कुछ फ्रिक्शंस है, कुछ ना कुछ चल रहा है। अब आप उनके लिए कैसे करेंगे? अगर आपका मन करे तो यू कैन टेक देयर फोटोग्राफ इन फ्रंट ऑफ यू, या उनका चेहरा इमेजिन करके या उनकी आंखें इमेजिन करके यू विल कीप डूइंग लॉट ऑफ होपोनोपोनो फॉर देम। I'm sorry, keep saying I'm sorry to them for always judging you, please forgive me, thank you, I love you. Keep giving lot of love, because the reason आपका रिलेशनशिप नहीं टिका या रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत ऐसी खामियां आई, उसके पीछे कारण क्या था? आपने हमेशा रिलेशनशिप में कंप्लेन या रिलेशनशिप में नेगेटिविटी पे फोकस किया। वट एवर यू फोकस ऑन ग्रोज, and because you focus on that, this person is not loyal to me, आपने शक किया होगा, आपने जजमेंट्स दी होंगी, आपने ब्लेम किया होगा, और धीरे धीरे वो रिलेशनशिप आपका फेड होने लग गया। तो गिव लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स टू योर रिलेशनशिप। या ठीक है, जब आपने ये कर लिया तो अब थोड़े दिन जब आप अपने पार्टनर के लिए करोगे, फिर उसके बाद आता है सबसे टफ पार्ट, जो बहुत लोग उस लेवल तक जाएंगे नहीं। आई एम कंप्लीटली श्योर ऑफ दैट, कि आपको उस थर्ड पार्टी के लिए होपोनोपोनो करना है। वो थर्ड पार्टी के लिए होपोनोपोनो, आप सोचोगे मैं क्यों उसको सॉरी बोलूं, व्हाई शुड आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस, व्हाई शुड आई थैंक दैट पर्सन हु टुक अवे लव ऑफ माय लाइफ, एंड व्हाई शुड आई से आई लव टू दैट पर्सन। See, it is always important. You need to understand at the energy level, you, me, everything is at the same. At the energy level, we all are one. So मैंने क्या पहले शुरुआत की कि आप ही का रिफ्लेक्शन आपको सामने वाले में दिखेगा. It is only your projection that you're putting into the other person. The moment you agree, the moment you reach that level कि आप थर्ड पार्टी के लिए भी उतने ही आसानी से, उतने ही स्मूथली I am sorry, please forgive me, thank you, I love you कर रहे हैं, उस दिन आप सही मायने में जानेंगे कि होपोनोपोनो तकनीक है क्या. उस दिन आप सही मायने में जानेंगे कि वाकई होपोनोपोनो में इतनी पावर है कि आप सोच भी नहीं सकते. बट बहुत लोग वो तीसरे लेवल तक जा ही नहीं पाएंगे. और सबसे बड़ी बात, जब आप उनके लिए कर रहे हैं तो यू हैव टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब जब मैंने ये बोल दिया तो मुझे पता है कि बहुत लोग तो वीडियो भी ऑफ करके चले जाएंगे कि मैं क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं. शी क्रिएटेड दैट, ही क्रिएटेड दैट, व्हाई शुड आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट कीप डूइंग इट. Even if you don't feel anything, keep chanting, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you,
I can guarantee you, you will get results. I am not promising you that you will get results of your choice, because there is universe who is thinking of your highest good. क्योंकि हमारी इमेजिनेशन में, हमारे वर्ल्ड में हमें लगता है कि यही सब कुछ है, दिस इज द बेस्ट फॉर अस, but we fail to understand that always universe, it has always your back. universe हमेशा आपको देख रहा है, और universe आपको वही चीजें देगा जो आपके highest good के लिए है. इसलिए जब आप मैनिफेस्ट करते हैं कोई भी चीज, किसी भी व्यक्ति को, किसी चीज को अपने जीवन पे, always remember that, ask universe whether it is for my highest good or not. Whether, if it is for your highest good, then please give it to me, universe. And for those of you who think कि यार मैम इतना कुछ करने के बाद भी the other person didn't come back, I didn't get the relationship, the breakup happened, then always trust the choice and always trust the decision of their higher authority. क्योंकि आपसे भी ऊपर कोई है जो आपके बेसिस पे डिसीजंस ले रहे हैं, और वो आपके भले के लिए ही सोच रहे हैं. And definitely you don't want to be that person. आप वो व्यक्ति नहीं बनना चाहते जो बेग करेंगे किसी रिलेशनशिप के लिए, because when you beg for love, you're not asking for love, you're not coming from an abundant mindset. And very, very important for a healthy relationship that you need to vibrate at a higher frequency. अगर आप low frequency में करेंगे तो आप जो कुछ भी करके उस पर्सन को वापस तो अपने जीवन में ले आएंगे. एंड बिकॉज आई नो, बिकॉज आई हैव डन ऑल द पॉसिबल थिंग्स दैट यू कैन थिंक ऑफ टू गेट बैक द पर्सन. I had loved at one point of time, but remember one thing, even if that person comes back, the end result, which is love, happiness, trust, intimacy in the relationship, you will not be able to get that. अब वो व्यक्ति तो आ जाएगा क्योंकि आपको तो पर्सन से लगाव था, बट ये जो सारी एंड रिजल्ट है जो एक रिलेशनशिप में होना चाहिए, जहां पे बहुत सारा लव होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, इंटीमेसी होनी चाहिए, केयर होनी चाहिए, वो सारी चीजें आप नहीं ला पाओगे, क्योंकि आपका जो लक्ष्य था वो तो उस व्यक्ति के ऊपर था, एंड रिजल्ट पे नहीं था. तो इसलिए मैंने बोला इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि आज जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी, आई विल गिव यू 2 ऑप्शंस, यू हैव टू मेक अ चॉइस विच वे यू वांट टू गो and not think about it. You're becoming so much desperate to get that person back into your life, failing to understand and failing to go through the consequences. Maybe you can get that person for 1 year, for 6 months, you can control that person, you can pretend to be in love, the other person can pretend to be in love, yeah, but just know that in the higher, for the longer run, it may not be very healthy for your relationship. So choose that up to that person. If that person willingly wants to come back, then it's a universe call. अगर वो willingly, आपने अपना hooponopono कर लिया, आप न्यूट्रलिटी में आ गए, आपने न्यूट्रल एनर्जी सामने वाले को दे दी, आपने बहुत सारा प्यार, बहुत सारा पॉजिटिविटी सामने वाले को दे दिया, उसके बाद उनकी विलिंगनेस है, अगर वो आते हैं, then it is a bonus for you. Then that means even universe wants this for you. That means your whatever you want, whatever your desires are, is also aligned with the universe plan. Then it is very, very good. Then this can be a reality. But from your end, the best you can do is keep clearing any kind of negative emotion towards that person, towards a third party, towards your relationship, and whatever you're holding to yourself. Sometimes you also go in guilt trip. It is because of me. मेरी वजह से हुआ, मैंने कदर नहीं की, मुझे उनको संभाल के रखना चाहिए था, या मैं ही समझ नहीं पाया इशारे. So many things. Then keep forgiving yourself. It is not because of you. It is because of the universe. It is because something you were unaware of, जो आपकी एनर्जी से शायद आप ही नहीं जानते थे. So keep clearing your emotions, your feelings. You don't have to go into the guilt trip that I lost something. There are 7.7 billion people in the world. That person is not the only one. Always remember, there will be, one person will go, and when universe has a better plan, you will get the other person. But then you have to vibrate at that frequency. नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है कि चलो आपका ब्रेकअप हो गया, you went through a breakup, you're very sad about it, you're very depressed about it, you follow the same insecurities, fear, and then when you attract the next partner, the similar situation happens, because it is not about the person. Remember, it has to do with your energy. Which energy are you vibrating? Which frequency are you vibrating at?
So rather focus on yourself, love yourself so much, इतना अपने आप को प्यार करो, इतना अपनी एनर्जी को, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखो कि जो नेक्स्ट पार्टनर भी आए आपकी लाइफ में, he should be also vibrating at that, or she should be also vibrating at that frequency. And you focus on manifesting a beautiful, healthy relationship. Memories are still there, it is going to be there, it's okay. You must, आपकी कुछ अच्छी मेमोरीज होंगी, कुछ बुरी मेमोरीज होंगी, दैट्स अ ब्यूटीफुल लर्निंग फॉर यू. ऑलवेज रिमेंबर, जो भी लोग आपके जीवन में आते हैं, either they become a blessing or a lesson. So you take it as a blessing or you take it as a lesson. If you have good memories, take it as blessing that I had beautiful memories with that person. And if you think that you have very harsh memories with that person, take it as a lesson. And both the time, also remember one thing, that if you think कि relationship didn't last long, इसका इतना ही था, तो उस पूरे रिश्ते की, अगर कोई रिश्ता आपका 3 महीने चला, 6 महीने चला, 4 साल चला, तो ये भी ध्यान रखना कि उस रिलेशनशिप की एक्सपायरी उतनी ही थी. यानी कि उस 4 महीने से ज्यादा किसी एक पर्सन में क्षमता ही नहीं थी आपको वो प्यार देने की. And that's the reason, every relationship comes with the expiry date. Some relationships are evergreen and forever. They don't come with an expiry date. But अगर आपको लगता है कि वो relationship आता है expiry date के साथ, तो acknowledge even that those of 3 months का relation हुआ, 6 months का relation हो, उसको acknowledge करो, उसकी good memories को याद रखो, and then vibrate at a frequency that, okay, it was a beautiful blessing or a lesson. Now it's time for me to find someone with whom I can have a better version of myself. I cannot do the same mistakes or whatever I have evaluated before. अब मैं उनके साथ वो गलतियां नहीं करूँ. It's very simple. Now you make a choice. अब मैं आपको दूसरा पर्सपेक्टिव भी देती हूँ. दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि you want to eliminate the third party. You want that the third party should be removed, and you'll find a lot of videos. But also ask this question. If you love a person wholeheartedly, do you want to see them happy or sad? If your answer says you want to see them happy, then if their happiness is in that third person, then why is it making you sad? That means, was it love with conditions, or was it love unconditionally? Yeah. Then take a step. कि आप अगर चाहते हो, if you love someone, so it's a general phenomenon. I pray for happiness, I pray for his happiness, he should be happy wherever he goes. Now when that person chooses happiness in some third person, why is it making you sad? Then you need to question your love for that person. Is your love with conditions, or is your love unconditionally? Because when you love someone unconditionally, that means your entire focus will be happiness and love for that person, no matter whether that person is with you or with someone else. Yeah, I can come from that space because the other person was happy. Because जब आपके रिलेशनशिप में सामने वाला खुश है, तो आप भी उनकी खुशी में खुश हो जाओ ना. यही तो प्यार है. That's the reason you love them, no? And you kept saying these words, I'll always pray for your happiness. Now when that person wants to be happy, you are becoming the biggest hindrance. You are doing all the techniques possible in the world to break that relationship, to break their happiness. Why is it so? When you love someone, you condition them that their happiness belongs to you. Their happiness has to be with you. But they don't want their happiness with you. They want their happiness with somebody else. Yeah. So make this thing, make a choice today. Which kind of person, what kind of love do you have? Do you have that desperate love that, come what me, mujhko to wahi chahiye. If you want that, then okay, you do hooponopono. Yeah, let the universe see, let the universe guide you with whatever is the best for you. And if you're someone who's really having a cautious, is in the conscious, and you really want to make a decision and think about it, what kind of love do you want to give to that person? What kind of relationship? Even if that person comes back, what kind of relationship dynamics you want with that person? वो वापस आ भी जाएंगे तो आपका क्या डायनामिक्स होगा? चलो वो मजबूरी में भी आ जाए, या आपने इतना कुछ टेक्निक्स कर ली वो वापस आ जाए और वो खुश ना हो, तो क्या आप उस रिश्ते में खुश रह पाएंगे? Make a choice from here and do give me your comments
What did you think? What was your realization? And how you're going to do Ho'oponopono? Once again, I'll quickly give you a recap. Very simple, 3 steps to follow. Firstly, start with cleansing your emotions, your feelings. You're feeling hurt, jealous, whatever. Need to acknowledge, you need to identify. Keep cleaning yourself, keep cleansing yourself with, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Once you're sorted with yourself, then do it for your partner. Keep giving them lot of love, blessings, all that you can give, all the gratitude you can give, all the love you can give, all the forgiveness you can give to that person. You can have an intention. आप उनका intention रखिए, उनकी फोटो रखिए, आप उनके लिए करिए. उनके लिए जब थोड़े दिन कर ले, फिर थर्ड पार्टी के लिए करिए, उनके लिए भी करिए, दिल से करिए. और ये स्टेप लेना है. थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, यू विल नॉट बी कंफर्टेबल. दैट्स व्हाई यू नीड टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. I know it will not be a very smooth experience for most of you, but make a choice. What does your conscious says? Whether you want to go that way, whether you want to just have that person, or you really want to be very neutral at the energy level for all three of you. Make a decision and give lot of love, lot of gratitude, and lot of blessings. And then expect miracles. Because you don't know what is in store for you, and it will come up. Whatever is best for you will come up. Believe me, it will happen. Yeah. Sometimes if it also takes 1 year, but it does work. Yeah. It has worked for a lot of my students, a lot of people who have followed me. Yeah. Even if it takes 1 year, but it does work. You need to settle at the energy level, and that's a conscious choice you should make right now. What is that you want? Whether the love for them is unconditional or conditional, right? So if you have not subscribed to my channel, do subscribe. I keep posting a lot of videos on Ho'oponopono, a lot of videos on manifestation techniques. Yes, stay tuned and do share your realization, your feedback in the comments, because that will give me a clarity. What is that you gain out of this video, so that it inspires me to make more such videos, right? Thank you so much. And before going, just once again, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. A lot of gratitude to all of you for joining me. And yes, thank you so much.